Hello friends, myself Rasika Pakaria from Arahant College. In last lecture, we were studying about the stage 4 crisis of identity. Right? In that we studied fourth stage began from 1948 to 1970 with the rejection of policy administration, dectonomy, and principles of administration. पब्लिक एडमिन सफर्ड फ्रॉम द क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी. अभी ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो बोल रहे हैं उसमें क्या है, लोगों के अलग अलग व्यू आने लगे. सम ऑफ देम रिटर्न टू द फोल्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस. तो फिर कुछ ने बोला कि ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है. जॉन गॉस इन हिज आर्टिकल Untitled Trends in the Theory of Public Administration developed a thesis that a theory of public administration means in our time a theory of politics also. Then some other moved towards the administrative science. They argued that administration is administration irrespective of its setting. They found the Journal of Administrative Science quarterly in 1958 by March and Simon. Behavioral Theory of the Firm 1963 by Cyrus and March. Handbook of Organization 1965 by March and Organization in Action 1965 by J.D. Thompson. However, in both cases, public administration lost its separate identity and distinctness and had to merge with the larger field. This is why this stage in evolution of public administration is called the stage of crisis of identity. Then various development took place during this phase of the evolution of public administration. They are rise of human relation approach advocated by Christ and Gray, Douglas, then René Libert, Warren Bennis and other. Growth of comparative public administration, advocacy of ethological approach to the study of public administration by F.W. Riggs, conceptual of development administration by Edward Wagner, then crystallization of the concept of administrative development by F.W. Riggs, emergence of new public administration, advocacy of public choice approved by Vincent Armstrong and other. Rise of critical perspective of public administration. Then we move towards the stage 5, public policy perspective. That was from 1971 continuing. The main theme in this final stage of evolution is the concern for public policy analysis. Public administrative are showing much interest in the related fields of policy science, policy economy, policy making and policy analysis and so on. Public policy approach got acceptance in administrative analysis as the traditional idea of politics administration dectonomy was adopted. According to Robert T. Goldberg-Diswicki, the public policy approach stage in the evolution of public administration is built upon two basic themes: the interpenetration of politics and administration at all or many levels, then the programming character of all administration. In all this, the themes directed attention in public administration towards political or policy making process as well as towards specific public program. Then the nature of public administration. First is there are two natures, that is the integral view or फिर the manager. First is the integral view. According to notice क्या है, administration is the sum total of all the activity. Like जो भी आप काम करते हो, मैनुअल, क्लरिकल, टेक्निकल, मैनेजरियल, इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि बाबा आप एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का काम कर रहे हो, राइट. फिर वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट कोई भी हो, एवरीवन कॉन्स्टिट्यूट टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्राइज all types of operation undertaken by all persons ranking from the lowest to the highest in order to implement public policy. Then managerial view. According to this view, administration comprise the work of those persons who are engaged in performing managerial view. और managerial and public administration कौन से principles पे है? It works on planning, organizing, directing, controlling and coordinating of government operation. The work concerned with management units and controls the activity of
all other as part of the coordinated endeavors in an enterprises. Then next is the policy making and implementation. American writer James had researched at different times to determine the nature of public administration. See, Fisher especially considers policy formulation than policy implementation because he thinks that policy implementation will fail if policy formulation is improper. See, अगर आप पॉलिसी अच्छे से बनाओगे तभी तो इम्प्लीमेंटेशन भी सही होगा. अगर आपकी पॉलिसी गलत रही तो इम्प्लीमेंटेशन सही होगा क्या? नहीं. सो हियर दे आर स्ट्रेसिंग ऑन पॉलिसी प्रॉपर बननी चाहिए तभी इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर होगा. देन वी आर लुकिंग एट द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सी नेचर में डॉक्टर आइंस बोल रहे हैं. देन दे आर शोइंग इंटरनल अप्रोच, मैनेजरल अप्रोच. ये दोनों मिला के दे हैव गिवन विद जेम्स डब्ल्यू प्रेस्ली. पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लस मार्शल ई डायमॉक एंड ग्लैडिस ओ डायमॉक. फिर उसमें ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर एंड मेथड, पर्सनल मैनेजमेंट, इक्विपमेंट एंड सप्लायर्स, प्रोसीजर एंड मेथड, governmental finance and administrative accountability. Right, now we'll start with the first point, that is the nature of public administration. First point क्या है अपना? nature of public administration. Marshall E. Dymock and Gladys Dymock have identified several elements to determine the nature of public administration. See, Marshall E. Dymock or Gladys O. Dymock, what they have come up? They have identified several elements that determine the nature of public administration, such as organization. The organization plays a vital role to systematically and properly execute administrative work. See, यहाँ पे क्या है? The organization plays a very important role, right? क्यों? अगर ऑर्गेनाइज अच्छे से सब करोगे तभी तो आपका सारा काम अच्छे से होगा. अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन एकदम सिस्टमेटिक वेली जाना है, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो बोलेंगे मैनेजर को, मैनेजर बोलेगा उसकी टीम को, वो टीम बोलेगी उनके हाथ के नीचे जो क्लार्क वगैरह है उनको. तो क्या है, अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली और सिस्टमेटिकली सेटअप रहेगा तो क्या है, आपके काम भी प्रॉपरली एग्जीक्यूट होंगे और आपका काम भी प्रॉपर अच्छे से होगा एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट वॉट एवर यू कैन. थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ, अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है ना. राइट, बराबर है ना. जैसे अपने कॉलेज का ही एग्जाम्पल देखो. सी, अभी स्टाफ स्टूडेंट्स का इन सब का कौन देखता है? आतिश सर देखते हैं. राइट, कि आतिश सर ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे ही ले रखी है क्या, कि बाबा कितना सिलेबस पढ़ाना है, क्या ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? नहीं, उन्होंने बोल दिया हमको कि मैम ये सब्जेक्ट आप लोगे. राइट, एंड ही हैज़ टोल्ड अस कि बाबा उन्होंने उनके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बच्चों को पढ़ाने का काम कॉलेज वालों का है, तो उन्होंने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर दी, मेरे को दे दी कि मैम आप बीए के 5th सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ाना है. राइट, एंड ही हैव टोल्ड कि बाबा अभी एग्ज़ाम हुआ है, आपके पास 2-3 महीने का टाइम है, उतने पीरियड में आपको ख़त्म करना है. राइट, तो उनका हो गया. अब इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि आई शुड टीच यू प्रॉपरली. हाँ, आई शुड कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम. राइट, उसके लिए मुझे बुक्स चाहिए. ये बुक्स मुझे कहाँ से मिलेंगे? नॉन टीचिंग स्टाफ लाइब्रेरी से मिलेंगे. बुक्स आर नॉट अवेलेबल, आई शुड इन्फॉर्म द नॉन टीचिंग स्टाफ. राइट, ऑफिस में जाके मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ये बुक नहीं है, मुझे ये बुक चाहिए. तो क्या है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी है एंड आई हैव गिवन द अथॉरिटी दैट आई शुड सी दैट कि यू ऑल I complete the syllabus in time. I make sure कि you do studies properly and all. छोटे बच्चों को तो करना पड़ता है ऐसे, बट आप बड़े हो तो अब ये मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं कर लूँगी. और मेरे को अथॉरिटी भी दी है कि सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करना, क्या करना है, सारा आपका काम है. बुक्स जो मंगाना है मंगाओ, इतनी अथॉरिटी है मेरे को. द ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेबल पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. सी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्टेबल पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. दैट इज टू से it is compared with the medical science of autonomy from an administrative perspective. See, that is to say क्या है,
ये क्या है, इट इज़ कंपेयर्ड विद द मेडिकल साइंस ऑफ एटोनॉमी फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव. देन पर्सनल मैनेजमेंट. द पर्सनल नीड टू एक्टिवेट एनी ऑर्गेनाइजेशन. सी द पर्सनल, अब ये जो पर्सनल क्या है यहाँ पे एक एक्टिवेट करना है ऑर्गेनाइजेशन को. द पर्सनल्स आर द ड्राइविंग फोर्स टू अचीव द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सी ये पर्सनल्स क्या है, दे आर द मेन ड्राइविंग फोर्स सो दैट यू अचीव द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So personal appointment and management are the dynamic directions of the administration. See, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, personal appointment and management are the dynamic directions of the administration. Then equipment and supplies. The organization need a place, building or home and furniture to keep working. See, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ प्लेस, बिल्डिंग और अ होम एंड फर्नीचर टू कीप वर्किंग. अभी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चालू हो जाएगा क्या, नहीं. जगह चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, या आपका घर भी रहा तो उधर एटलीस्ट टेबल चेयर्स वगैरह तो चाहिए ना, तभी वो सब कुछ अच्छे से काम कर पाएगा, राइट. द पर्सनल नीड पेपर, पेन, डॉक्यूमेंट, टाइपिंग मशीन एंड डिफरेंट स्टेशनरी एलिमेंट. देयरफॉर दिस एलिमेंट्स हैज़ टू सप्लाई रेगुलरली. जो भी काम कर रहे हैं उसको पेपर तो चाहिए, मतलब टेबल चेयर दे दिया तो हो गया, क्या काम करता है हम. हाँ, एक छोटा सा रूम दे दिया, टेबल चेयर दे दिया, फर्नीचर दे दिया थोड़ा बहुत और बोला काम कर पाएगा, नहीं. उसके लिए पेन, पेपर, कैलकुलेटर, बहुत से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, देन एटलीस्ट कंप्यूटर चाहिए और बहुत से स्टेशनरी ज़रूरी है. तब भी क्या होगा, और इन सब का सप्लाई रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, तब भी क्या है, everyone would be able to work in a proper way. Moving towards the next point, procedure and method. Properly leading the administrative work has to take special procedure and method. See, properly leading the administrative work. अभी administrative work अच्छे से complete होना चाहिए, अच्छे से आगे बढ़ना चाहिए. So what are you supposed to do? You should go with some procedure and method. एक proper method रहना चाहिए, एक proper procedure रहना चाहिए. The personnel take suitable training to implement this procedure. See, ये जो personnel है, what he does, he takes proper training so that he can implement the procedure. Meanwhile, it is required to amend or change this procedure and method. See, meanwhile क्या है, it is required to amend or change this procedure and method. Governmental finance. Finance is the ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल वर्क. सी, पैसा है तो सब कुछ है, थोड़ा बहुत भी पैसा रहा तो आप क्या एक थोड़ा सा ऑफिस, छोटा सा ऑफिस खरीद के फर्नीचर, टेबल, चेयर, अदर स्टेशनरी ला सकते हो, है. पैसा ही नहीं है तो आप ऑफिस कहाँ से लाओगे, ऑफिस ही नहीं है तो आप कुछ काम कर पाओगे, नहीं. बट ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू डू एनी वर्क. सो फाइनेंस इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल वर्क. Finance needs to lead government officials and organization for a specific purpose. See, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइनेंस नीड टू लीड गवर्नमेंटल ऑफिस एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस. फाइनेंस का ज़रूरत ही पड़ता है अपने को, तभी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑफिस सब कुछ अच्छे से काम करेगा. बिना फाइनेंस के कोई काम नहीं करता, कुछ नहीं हो सकता. सो requires grants, supplies, expenditure method and proper finance management accelerate the administrative structure to success. अभी अपने को क्या, ऑफिस चलाने के लिए अपने को थोड़ा सा ग्रांट्स लगेंगे. ग्रांट्स मतलब अरे इसने इतने इतना डोनेट किया, मेरे को ऑफिस चालू करना है, मेरे को खुद का बिजनेस सेटअप करना है, तो बहुत से छोटे छोटे बैंक्स क्या है, लोन देते हैं. प्रधानमंत्री की कोई योजना भी है ना इसके लिए, जहाँ से आपको खुद का बिजनेस खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए आपको लोन दिलाती है बैंक से. हाँ, तो प्रधानमंत्री की भी एक योजना है, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, यू कैन गेट ग्रांट्स, देन सप्लाईज रहता है, एक्सपेंडिचर्स मेथड रहते हैं, और प्रॉपर फाइनेंस मैनेजमेंट रहना चाहिए. अगर फाइनेंस मैनेजमेंट प्रॉपरली काम करेगी, आपका एक एक रुपये का भी हिसाब रखेगी, तो क्या है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, इट वुड गो इन अ प्रॉपर वे, और तब भी आपका सब कुछ सक्सेसफुल होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी. कंट्रोलिंग इज इसेंशियल टू लीड द एडमिनिस्ट्रेशन टू एन एक्चुअल गोल. से कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग ज़रूरी है ताकि क्या है,
आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम करे। Administrative controlling may be two types. For example, internal controlling and external controlling. See, administrative controlling क्या है? It can be of two types, right? For example, internal controlling भी हो सकता है और external controlling भी हो सकता है. Through external controlling, people want to know the nature of public administration related situation. See, through अभी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से अपने को कंट्रोल करना है, तब भी अपना काम अच्छे से जाएगा, राइट। तो थ्रू एक्सटर्नल कंट्रोलिंग क्या है, लोगों अपने पास आएंगे, लोगों को पता चलेगा कि बाबा अपना ऑफिस यहाँ यहाँ पे है, अपन यहाँ यहाँ काम कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कैन गिव द identity of responsibly working with honesty, uprights, etc. See, as a result क्या है, administrative management can give the identity of responsible working with honesty, uprightness, etc. Then is public administration science or arts? अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अपन बात कर रहे हैं, ये एक साइंस है या आर्ट्स है, इसके बारे में कुछ तो पता रहना चाहिए अपने को। इज इट अ साइंस और आर्ट्स? कांट से, राइट। फिलहाल तो कुछ नहीं बोल सकती अभी अपन, इस पर उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है, वो अभी क्लियर हो जाएगा। At the first glance, it seems easier to accept public administration as an art. See, अपन जब पहला ऐसे देखते हैं करते हैं तो ऐसे लगता है कि पापा इट मे बी एन आर्ट। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक आर्ट हो सकता है। इट इज़ जस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट अफेयर एंड फॉर मोस्ट part it does not follow the law of science, like absent of normative value, predictability of behavior and universal application. See, इट इज़ जस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट अफेयर। ये क्या है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ प्रॉपर गवर्नमेंट अफेयर। और मोस्ट पार्ट क्या है, इट डज नॉट अलाउ द लॉ ऑफ साइंस। ये लॉ ऑफ साइंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, लाइक एब्सेंस ऑफ नॉर्मेटिव वैल्यूज, predictability of behavior and universal application. So that mean we cannot list it into a respectable category of scientific subject. So that means that इसका मतलब क्या है, we cannot list it to into a respectable category of scientific subjects. There are many authors who facetiously defended it and argued that public administration as an area of study is indeed a science. See, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे many authors हैं जो डिफेंड कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इज एन एरिया ऑफ स्टडी इन साइंस। ऐसा बहुत लोग आर्ग्यू कर रहे हैं, दे आर आर्ग्यूइंग ऑन दिस। नाउ एक्चुअल में क्या है क्या नहीं, वी डोंट नो। The earliest of them was Lawrence von Stein, an 1855 a German professor from Vienna who said that public administration is an integrated science and viewing it just as administrative law was a restrictive definition. See, अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये जो सबसे पहले लॉरेंस वॉन स्टेन इन 1855, ये जर्मन प्रोफेसर है फ्रॉम वियना। उसने क्या बोला, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये एक साइंस भी है और उसको सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हिसाब से देखना क्या है, ये एक रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे उस पर। इन मॉडर्न टाइम्स कैटेगराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज साइंस found favor with many, the most important one being the father of American public administration, President Woodrow Wilson. See, in modern times क्या है, categorizing public administration as a science found favor with many, the most important one being is the father of American public administration, President Woodrow Wilson. We shall read more about the Wilsonian view of public administration in the next article. However, he mainly emphasized that the objective of administrative study is to discover what government can properly and successfully do, how it can do those things with utmost efficiency with least possible cost of money or agency. See, we shall read more about the view
वॉड्रो विल्सोनियाज व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्टिकल में, जिसके अंदर वो ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं एंड इट टेल्स द proper successful do and how it can does things with most efficient with least possible cost of money or energy. After Wilson, another important argument came from Frederick Taylor, who wrote the book The Principle of Scientific Management 1911, in which he opposed to discover one best way of doing things operation and thus save the cost of time and energy. उसके बाद कौन आया? ये विल्सन आया. विल्सन के बाद फेडरिक टेलर आया. वो केम विद द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसके अंदर उन्होंने बेस्ट वे बोले हैं कि जिस किस तरह से आप आपके काम कर सकते हो विद कम टाइम एंड एनर्जी में. लूथर ग्यूलिक, एल यूरविक collectively published papers on the science of administration which reaffirmed its status as a science. उन्होंने बुक पब्लिश की दोनों ने मिलके और वो क्या है, और एक नया स्टेटस दे दिया एज ए साइंस बोल के. F.W. Wogby stated that public administration, like science, has certain fundamental principles which can be generally applied and therefore it is a science. See, F.W. Wogby ने क्या किया? He stated that उसने क्या किया? Stated that public administration, like science, has certain fundamental principles which can be generally applied and therefore it is a science. और उसको साइंस का नाम दे दिया. However, there still remain certain aspects to be established before public administration can be actually and in real terms be classified as a science. However, क्या है यहाँ पे और बहुत से एस्पेक्ट रहते हैं टू बी established before public administration और actual क्या है in real terms be classified as a science. The place of normative value in public administration should be clearly defined. See, अभी ये जो प्लेस है ऑफ नॉर्मेटिव वैल्यू और नॉर्मेटिव वैल्यू की जो प्लेस है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? इट शुड बी डिफाइंड क्लियरली. मोर एफर्ट्स शुड बी पुट इनटू अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन नेचर एंड डायनामिक्स एट प्ले इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. सी, more efforts क्या है? should be put in to understanding the human nature and dynamics at play a very important role in public administration. Lastly, the principle of public administration should drive reference from across the world, culture, type of state, etc. to make them more universal and free of cultural, religious and political bias. See, lastly क्या बोल रहे हैं? ये जो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इट शुड ड्राइव रेफरेंस फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. इसका जो रेफरेंस है पूरे वर्ल्ड से लेना चाहिए, अलग अलग कल्चर से लेना चाहिए, स्टेट से लेना चाहिए. तब भी क्या है, इसके अंदर सारे यूनिवर्स सब यूनिवर्स के लॉ आएंगे और ये कल्चरल फ्री रहेगा, रिलीजन फ्री रहेगा और पॉलिटिकल बायस रहेगा. मतलब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक लॉ है इट वुड बी सुटेबल फॉर एवरीवन. The advent of the modern welfare state itself has added to the changing approach to public administration. See, the advent of the modern welfare state itself क्या है? इन्होंने ऐड किया है to the changing approach in the public administration. The kind of activities and sphere of work have been more varied and dynamic, and there has been never before interest in actual improving the efficiency of government. See, the kind of activity and the sphere of work have been more varied. सब अलग रहा है, डायनामिक रहा है एंड और क्या है इतना इंटरेस्ट एक्चुअल में किसी ने नहीं लिया और क्या है इंटरेस्ट लेने से क्या हो गया, इफ़िशेंसी ऑफ द गवर्नमेंट बढ़ गई है. Subject matter experts like Frederick Taylor have opened ways to explore experimentation, observe, collection of data, and analyze based on the which the principles and laws can be made. See, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स लाइक फेडरिक टेलर, उन्होंने क्या किया है, सब कुछ पूरा एक्सप्लोर किया है, एक्सपेरिमेंटेशन किया है, ऑब्जर्व किया है, डेटा एनालाइज किया है, सब कुछ करने के बाद दे केम अप विद सब प्रिंसिपल्स एंड लॉज. देयर आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑथर्स लाइक मेटकल्फ, फैयोल, एमल्सन, पॉलेट, मॉनी एंड मोर रिसेंटली ड्रूकर एक्सेट्रा हु हैव रिटन ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. से यहाँ पे क्या है, बहुत से नए नए ऑथर आए लाइक
मेटकाल्फ, फैयोल, एमल्सन, फ्लॉलेड, मोने और रिसेंटली डुकलर, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे काफ़ी कुछ लिखा है इस पे. In fact, Drucker wrote a book called The Age of Discontinuity, and one of the chapter of the book called Sickness of Government became the basic of the new public management theory popular in 1980s, which emphasized the market-oriented management of the public sector. सी. और एक तो क्या है, ये जो ड्यूकलर है उसने क्या किया, उसने अभी अभी रिसेंटली बुक लिखी है, दैट इज़ द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी. और उस बुक में एक चैप्टर ऐसा भी है, द सिकनेस ऑफ गवर्नमेंट. लाइक गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, इट बिकेम द, इसलिए क्या हो गया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट थ्योरी आई है. और ये कब हुआ है, इन 1980s, जिसके अंदर ही इज़ गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू मार्केट ओरिएंटेड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर. किसको एम्फोसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, द मार्केट ओरिएंटेड मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर. सो one can safely say that with the changing times and more studies carried out in the field of social science, administration and human relations, the subject of public administration can no longer take the shelter of art and would have to merge stronger with relevant and fundamental principle like that of science. So ये क्या बोल रहे हैं, सो वन कैन, एक आराम से बोल सकते हैं, जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, जैसे जैसे, तो इसके अंदर स्टडी भी क्या है, और बढ़ती जा रही है. जैसे सोशल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिलेशन, ये सारे क्या हो गए, दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट कैन नो लॉन्गर टेक द शेल्टर ऑफ आर्ट एंड वुड हैव, और अब ये आर्ट्स के अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है. इट कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग, रिलेवेंट एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल लाइक दैट ऑफ अ साइंस. Finally, we can say that the nature of public administration is gradually changing and evaluating. See, finally, what we can say कि बाबा ये जो nature of public administration है, it is changing and evaluating. The more modern states take welfare program. अभी जो modern states है, what they are coming, they are taking up with more and more welfare program. The more nature of public administration and activities are changing. और क्या है, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज हो रहा है और नए नए एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे आ रहे हैं. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इंटरेक्टिंग विद द डिफरेंट न्यू थिंग्स टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द स्टेट एक्टिविटीज़. सी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इज इंटरेक्टिंग विद डिफरेंट न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ों से इंटरेक्ट कर रहे हैं टू कीप अब्रेस्ट ऑफ स्टेट एक्टिविटी. Therefore, determining the nature of public administration is so tough. इसलिए क्या बोल रहे हैं, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका नेचर जो भी है, इसको डिटरमाइन करने का आज बहुत टफ काम है. क्यों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, नए नए चेंजेस आ रहे हैं और ये क्या है, एक पूरा प्रॉपरली कम्प्लीटली अलग फील्ड बन रहा है. लाइक सिर्फ आप साइंस का पार्ट वगैरह ऐसे नहीं बोल सकते, इट इज़ टर्निंग टू बी अ कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड. We'll wind up our lecture here. Meanwhile, you can read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pakaria@arahamedu.in. Thank you.